Welcome back students to e-learning platform Gyanmanshri Vidyapeeth online education. Students, in today's video lecture we are going to revise the poem from our main textbook Flamingo. The name of this poem is A Thing of Beauty and that is composed by a very well-known poet John Keats. Students, John Keats is a romantic poet from the age of Romanticism in the history of English literature. This is the fine specimen of his creations and work of arts. So students, let's have first the idea about the poet. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. Although the profession was something different, he was a surgeon by profession, but it is all about the passion and interest. By profession, he was not in this field of literature and the art, but actually his inner soul, the heart was belonging with these literature and art, and that's why he could be the poet. Remember students, poets are born. We can't be labeled from any degree, any qualification, educational qualification that okay, now the person is poet. No. This is the gifted quality by the God, and that's why here we can find John Keats as a poet, gifted poet we can say, and that's why though the profession is something different, the work of art is quite special. The following is an excerpt from his poem Endymion. This is a work of art composed by John Keats. A poetic romance, the poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. So this was all about the poet, the introduction of the poet, the significance of the poet, because this is not that ordinary person. Of course, any artist cannot be ordinary, but here we can find about John Keats that he is really wonderful about the creation of poetry in the age of Romanticism in the history of English literature. So let's begin the poem. Students, suppose you find any difficulty, you are free to ask me anytime. Okay, now let's begin the poem. ये जो हमने डिस्कस किया अभी वो पूरा पोएट के अबाउट था कि पोएट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी वेल नोन है, और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोएम का पोर्शन है. सो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. ब्यूटी का काम क्या होता है, ब्यूटी का पर्पस क्या होता है? जॉय, प्लेजर, एंजॉयमेंट. द सेम थिंग वी कैन फाइंड हियर ऑल्सो. वही बात हम यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं कि एक ब्यूटी का काम क्या है. प्लेजर, खुद को खुश करना, दूसरों को खुश रखना. सो यही ब्यूटी का काम है. And see students, here beauty is not the in narrow sense, it is in wider sense. यहाँ पे जो ब्यूटी का मतलब है वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में, वाइडर सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड ताज महल.
अगर आप ताजमहल को देख लो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फाइन स्पेसिमैन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। वो भी एक आर्ट का एक क्रिएशन, बहुत ही अच्छा सा है, वंडरफुल क्रिएशन है। सो दैट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ ब्यूटी। वो भी एक तरह की ब्यूटी ही है, ब्यूटी का ही एग्जाम्पल है। सो वेन एवर वी ऑब्जर्व ताजमहल, वॉट कैन वी फील? वी फील प्लेजर, वी फील जॉय। जब भी हम ताजमहल को देखते हैं तो हम क्या फील कर सकते हैं? हम रिलीफ फील करते हैं, हम जॉय और प्लेजर फील करते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ आर्ट एंड दैट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी। यही ब्यूटी का काम है और यही आर्ट का काम है। बिकॉज एनी वर्क ऑफ आर्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर टू पर्पज़। कोई भी जो आर्ट होता है उसके क्रिएशन की दो वजह रहती है। फर्स्ट, द आर्ट फॉर आर्ट सेक, एंड द सेकेंड, द आर्ट फॉर मोरालिटी सेक। पहला पर्पस होता है कि आर्ट का जो क्रिएशन हुआ है वो सिर्फ आर्ट के लिए ही हुआ है, किसी को कुछ सिखाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। बिकॉज मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ये क्रिएट कर लिया, दैट्स फिनिश। सेकेंड, द आर्ट फॉर मोरालिटी सेक। इट मीन्स किसी को कुछ सिखाने के लिए, किसी को कुछ प्रीच करने के लिए, समझाने के लिए, कुछ मॉरल सिखाने के लिए जो आर्ट का क्रिएशन होता है वो है आर्ट फॉर मोरालिटी सेक। हियर इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी। सो ब्यूटी डील्स विद आर्ट फॉर आर्ट सेक। यहाँ पे हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। सो ब्यूटी का कोई और पर्पस नहीं होता, उसका पर्पस सिर्फ आर्ट होता है। मीन्स अपने आप को खुश रखना, कि कोई क्रिएशन है, कोई वर्क है, कोई लिटरेचर का एग्जाम्पल है, अच्छा स्पेसिमेन है, तो उसे हम पढ़ें, उसे हम देखें। कोई पेंटिंग है तो उसे देखकर हम खुश हो जाए, कोई ऐसी अच्छी सी पोएम है तो उसे पढ़कर हम खुश हो जाए। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ ब्यूटी अल्टीमेटली, दैट इज सेड हियर। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. The thing of beauty is joy forever, and that's why the loveliness of beauty can increase only. It cannot be turned into nothingness. उसका जो पर्पस होता है वो जॉय है, प्लेजर है, और इसीलिए उसकी जो लवलीनेस होती है वो नथिंगनेस में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। इट्स लवलीनेस विल इंक्रीजेस, उसमें सिर्फ हमेशा इंक्रीज रहता है, वो हमेशा ही बढ़ता रहता है अपने आप में। जो ब्यूटी है, जो जॉय है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। But will keep a bore quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Here it is said, first the poet said us about the beauty, the purpose of the beauty, that actually the thing of beauty is joy forever. It means the purpose of beauty is joy forever. And ultimately, while talking and describing, the poet comes to the point. It is about the flowery band. Because see, we are now lost within ourselves and within the world. So then what is the thing actually that can be bound us with the earth? So maybe there can be a flowery band to bind us to the earth. कोई ऐसा फ्लावर का बैंड बना हो जो हमें इस पूरे से अर्थ के साथ हमें ज्वाइन कर सके, हमें अटैच कर सके। दिस इज द मीनिंग। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. Here, the poet wants to convey that with the help of
lightness, we can defeat the darkness. With the help of our virtue, we can defeat our evil side. With the help of beauty, we can defeat our ugliness of inner soul. Because right now in this world, we require these things the most. That's why it is said, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. With the help of beauty, the dark spirits from our heart can be moved away, can be washed away rather, and it is our requirement, because now the world has become full of cunning fellows. It is not, students, remember, it is not the beauty about the face, about the look, about the appearance. Here also the poet wants to convey the beauty about the nature, the beauty about the soul. So पे अटेंशन ऑन दीज थिंग. यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी मतलब कोई अच्छा दिखने वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ कि चलो जो कुछ भी अच्छा है वही ब्यूटी है, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है वही ब्यूटी है, ऐसा भी नहीं है. यहाँ पोएट ने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में इसका मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की है. पोएट हमें ये कन्वे करना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ आवर लाइटनेस, हम अपनी लाइटनेस इन द सेंस यहाँ पे हमें अपनी अच्छाई लेनी होगी. हम अपनी अच्छाई की वजह से, हमारी जो अच्छाई की जो ब्यूटी है, अच्छाई की सुंदरता है, उसकी मदद से हम वी कैन डिफीट अवर डार्कर स्पिरिट्स. हम अपनी जो बुराई है उसे डिफीट कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं. To defeat the evil side, to defeat the cunning fellows, we should have the beauty of heart. We must have the beauty of our soul. अगर हमारे पास अच्छाई है ही नहीं तो हम कैसे बुराई को हरा सकते हैं? बुराई को हराने के लिए हमें हमेशा अच्छाई की ज़रूरत होती है. सो इस सेंस में यहाँ पोएट ने हमें ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है. लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. Such the sun, the moon, trees old and young, fronting a shady boon for simple sheep. And such are daffodils. Daffodils, that is the name of flowers, the kind of flowers, yellowish flowers you can find. With a green world they live in, and clear reels that for themselves a cooling covert make. Gainst, here it is not written actually gainst, we have to understand it against. यहाँ पर ए डिसअपियर किया गया है, उसे ज़्यादा पोएटिक रिदम से बनाने के लिए एक्चुअली द पोएट वांट्स टू से अगेंस्ट. Covert make against the hot season, the mild forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. If we want to defeat the hotness that is not actually very pleasing for us, then we should have the greenery of forest, then we should have the fragrance of roses, then we should have the softness of flowers. यहाँ पे पहले रोशनी की हेल्प से अंधेरे को मिटाने की बात की गई. उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स है, सन है, मून है, स्टार्स है. वो सभी एलिमेंट्स की हेल्प से हम डार्कनेस को मिटा सकते हैं. एंड देन इट इज सेड दैट सपोज वी वांट टू रिमूव द हॉटनेस, देन वी हैव द कूलिंग. हमारे पास ग्रीनरी है, हमारे पास रोजेस की फ्लावर्स की अलग अलग सॉफ्टनेस है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी कैन हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस अनलाइकिंग थिंग्स. दैट इज सेड हियर कि हमें जो पसंद नहीं है, हमें जो अच्छा नहीं लग रहा है,
उससे हम अपने आप को बचाने के लिए भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है. सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस राइट नाउ. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. What is said, student, in the last lines? See, it is said about immortal drink. You know what is immortal drink? ये इमॉर्टल ड्रिंक वाला यहाँ पे कौन सी बात की गई है? यहाँ पे एक अमृत की बात की गई है कि जो कि हेवन से आता है, जो कि स्वर्ग से आता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है. सो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू हैव दिस इमॉर्टल ड्रिंक. मीन्स यहाँ पे ऐसे कॉन्क्रीट फॉर्म में इमॉर्टल ड्रिंक की बात नहीं की गई है, कॉन्क्रीट फॉर्म में यहाँ के अमृत की बात नहीं की गई है. बट व्हेन वी विल बी एबल टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स, व्हेन वी विल बी एबल टू बिलीव इन दिस थिंग्स, एंड व्हेन वी विल बी ब्यूटिफुल, व्हेन वी विल बिकम ब्यूटिफुल with the help of our soul, through the soul, inner heart, then actually we'll be able to have this immortal drink. जब हम अपने हार्ट से ब्यूटीफुल हो जाएंगे, जब हम अपने आप को ऐसे, वर्ल्ड को ऐसे समझ पाएंगे, तभी ऐसे लगेगा कि जैसे पूरे वर्ल्ड को ये इमॉर्टल ड्रिंक मिल चुका है. एंड एन एंडलेस फाउंटेन, इट मीन्स इट कैन नेवर बी एंडेड अप, दैट इज एंडलेस, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसकी यहाँ पे बात की गई है. और दिस इज द काइंड ऑफ इमेजिनेशन, दिस इमॉर्टल ड्रिंक about all these things. But in the hidden sense, the poet wants to convey, the poet wants to appeal us about the beauty with the heart, with the soul. Right now, because of having to get the things in luxury and all the facilities, actually we don't know. Sometimes we know even, then also we do not follow the heart, our emotions, our soul. So right now in this poem, through the medium of this poem, the poet wants to convey this message that the people should be beautiful through the heart, through the soul. So this is the actually real meaning of the beauty. And when we will understand these things, जब हमें ये बात समझ में आएगी, then in the true sense we will be able to be beautiful in a real manner. तभी रियल सेंस में, अच्छे सेंस में हम लोग इस दुनिया को समझ पाएंगे और अच्छे बन पाएंगे. इट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्यूटी. यही ब्यूटी का जो करेक्ट मीनिंग है वो यहाँ पे बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएट्री, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. इट इज composed by the very well known romantic poet John Keats. It is composed in very good manner, great manner, but it is not only about the physical beauty. Here also it is said about the beauty of our heart, the beauty of our soul. Okay students, I hope that you could understand this poem in the great manner. Suppose you find any difficulty, any doubt, you are free to ask me anytime. Thank you students, take care of yourself. Thank you, have a nice day.